जी हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आज जो हमारा शो है आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट आर गवर्नमेंट डूइंग एंड हाउ आवर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड बिल्डिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो आई थिंक आज के दौर में वेरी स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री जिस रैपिडली पेस से ग्रो हो रही है और हमारी यूथ जो है वो मोस्टली अपना करियर जो है वो आईटी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा रही है, चाहे हम आईटी ग्रेजुएट्स की तरफ देखें, चाहे हम फ्रीलांस की तरफ देखें, चाहे हम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स देखें जो आईटी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक उस सब चीज़ों को देखते हुए थिंक द टॉपिक जो आज हमने चूज किया है इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक प्रिविलेज द काइंड ऑफ गेस्ट आई हैव टुडे। आई थिंक टू वेरी एक्सपीरियंस पीपल वर्किंग इन मोर देन 2 decades इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने आई थिंक पूरी जर्नी देखी है फ्रॉम हैविंग आई थिंक इंटरनेट इन पाकिस्तान टू आज जिस स्टेज पे हम लोग हैं। सो आई थिंक लेट्स नॉट टेक एनी मोर टाइम और इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आतिफ है, मैं फॉर लास्ट 10 years आई एम वर्किंग इन एचआर कैपेसिटी और स्पेशली फॉर लास्ट 5 years आई एम वर्किंग विद डिफरेंट आईटी कंपनीज एज अ कंसल्टेंट। And I think one of the things which I would quickly share, and then we'll quickly move towards our guest, is that I think more than 60% of our population in Pakistan is between 18 to 30 years of ages. So where this is a big audience, at the same time, this is also a big opportunity for all of us to, guide them, train them into right programs and create opportunity for them. So I think I'll start with Jamil Saab. Jamil Saab, I hope everything is well. I'm going to quickly give you a small introduction about Jamil Saab. Jamil Saab is General Manager IT in SUI Southern Gas Company Limited. But I would like Jamil Saab to give a small brief about his career, and then मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जमील साहब आप जरूर हमें बताएं कि हमारे गवर्नमेंट के इस वक्त आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्टिव्स क्या दिखते हैं, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल कि आपने इवेंट में हमें एक अच्छे फोरम पे इनवाइट किया और लोगों की अवेयरनेस के लिए होपफुली कुछ अच्छी चीज़ें शेयर होंगी। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया, कुछ अरसा जॉब यहाँ की, वन ऑफ द मेजर टेलको इन सुपरनेट। देन आई मूव टू यूएई एंड सऊदी अरब। आफ्टर दैट आई केम बैक इन पाकिस्तान एंड जॉइंड एसएसजीसी. For the past almost 15 years, I am associated with SSGC. Throughout the career, I remained in IT, and I was into IT infrastructure development, in business application development. And apart from that, as soon as the technology evolved, I was into transformations and integrations. And quite a few achievements were when we started for the digitization, and also in the field of digital payments. First जो payment kiosk लगा था नादरा के साथ, that was in consortium with SSGC, and I was part of it. And then first ATM machine of National Bank back in 1999, first DSL link in Pakistan in Karachi in IDS 2000, that was commissioned by me. Satellites में I worked extensively. Supernet में I erected HNS IP based satellite system. I was working as part of that team. And then in Saudi Arab I erected 6 earth stations. In Dubai I was program manager for HNS. And during these assignments I was involved into the integrations. Getting back to SSGC, I have been a part of it for the past 15 years, and most of our systems are automated. Digital workflows are implemented. Now, coming back to your point that what we see the IT initiative, especially in terms of development. So we can see that government is very serious now. For the past 5-6 years, they are into building infrastructure development, and their focus, to me it seems that they are more into expanding the footprint of IT services. Because mainly if you see, infrastructure can be treated as a highway for all the IT services, be it the business application, be it the digitization, be it any other web-based or any mobile-based or any application. Infrastructure comes the first.
if you have a strong infrastructure, that will facilitate and make it very convenient for you to build those application or to increase the footprint of those application across the board. जैसे अगर हम देखें तो NTC is doing very drastic measures like extending DSL connectivity through PTCL in any of the remote areas of Pakistan. So this is one of the major challenges that in rural and urban areas, footprints of technologies are not the same. And apart from that, if you see the living standards are not at par, that in remote areas they cannot afford those connectivities which we are leveraging here. We are enjoying high speed connectivities, we are enjoying fibers, each and everything. But I can see initiatives where fiber is laid in multiple dimensions through the government as well as through the partner Okay. networks. And uh, in a very, if you see, regulated environment also, means it's not that anyone can start any setup. They are regulating and policies are being formulated. Like if we see that we are observing that different technology initiatives are taken by the government, especially for the socio-economic systems. Asif Saab is with us. If you see, if we empower our communities, they will be in much better position. I was seeing that Asif Saab is associated with agriculture industry. We are agriculture based economy. Asif Saab, I guess almost 50% of our dependence is on agriculture. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप जी So बिल्कुल ठीक 50% is agriculture, and if you see the productivity against that 50%, we are in no numbers. जी That is only करेक्ट because of non-adoption of technology. If we look into the agri-tech, like with the socio-economic systems, like health system, in financial system, in agriculture, in education, if we adopt these technologies, the footprints can be very easily means extended there. And a person who cannot afford those technologies, he is not skilled, he can means do miracles by using those agri-tech techniques. You must be, I hope you must be using those techniques. Same is the case with health sector, with education. Like we are sitting in various locations communicating, and quite a few people are connected with us. This is the beauty of technology, and this is all because of our government initiatives. Otherwise, all the time we had to get together, say travel all the way from various locations and perform various tasks. So I can see that there are government initiatives, and they are upgrading, they are trying to expanding their footprints. थैंक यू सो मच जमी सर। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स भी बड़े क्लियर हैं सारी गवर्नमेंट्स के जो अब काम कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम इंटेंट डेफिनेटली वहाँ पर है। अब आसिफ साहब हमारे साथ हैं, एंड आसिफ साहब इज बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर, अगेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फाउंडर हैं अपनी आईटी कंपनी के OISOL के। आसिफ साहब, आई स्टार्ट विद एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट। आपको क्या लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो आईटी कंपनीज चला रहे हैं, उनके पास क्या इस वक्त अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो गवर्नमेंट लेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें? थैंक यू सो मच आतिफ आई हैव बीन अराउंड more than 25 years experience in IT, and specifically I'm running IT based company, and we have already running a Mandi Express for a startup. उसमें जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो हम अभी देख रहे हैं कि जी गवर्नमेंट जो इस तरह से इनिशिएटिव ले रही है और एंटरप्रेन्योर्स को जितनी भी जो यंग यूथ है उनको प्रमोट कर रही हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, लाइक जैसे आप आईटी पार्क की बात करें तो वो उनको वहाँ पर अच्छी रिसोर्सेज और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव। अभी लास्ट मंथ में आई मेट विद उमर सैफ, और उन्होंने बताया कि जी अगर आप हमने इतना एक्सपेंड कर दिया है, इतना इजी कर दिया है कि अगर आपके पास कोई लोकेशन है और आप उस लोकेशन को रेंट आउट करना चाहते हैं तो दे विल प्रोवाइड द टेनेंट
ٹو اینی کائنڈ, مطلب اگر آپ یو ہیو انفراسٹرکچر تو اس میں وہ بڑا ایزی کر دیا. تو جو ابھی جیسے جمیل صاحب نے بات کی کہ رائٹ ناؤ وی آر فیسنگ ویری ایشوز فار اسپیسیفکلی ریجنل جو ہماری ڈفرینشیٹ ہے کہ رورل اور اربن ایریاز, تو اس میں جو ہے وہ بھی وہاں پر ایک بڑا رول اس کا آئی ٹی گورنمنٹ کا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی وہ انیبل کر رہے ہیں تھرو یونیورسٹیز کہ ان کے کیمپس ڈفرینٹ ایریاز کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو گرانٹس دے رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمارے جیسے انٹرپرینور ہیں اور وہ ڈفرینٹ طرح کی ایک لمیٹیڈ ایک سورس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فائنینشیل کنسٹرینٹ ہوتے ہیں, پھر ٹیکنالوجی کو اویل کرنے کی وہ چیزیں. تو گورنمنٹ نے ایک تو آئی ٹی پارکس کے تھرو بڑا اسٹرانگ انیشیٹو لیا ہے. دوسرا جو انہوں نے گرانٹس وغیرہ ابھی اسٹارٹ کی ہیں ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کو دینا, تو وہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک یو ایس ٹی ایف کے نام سے کہ انہوں نے ابھی ڈفرینٹ ایک پلیٹ فارم پہ لانچ کیا ہے, جس کے تھرو آپ جتنے بھی یوتھ ہیں اگر وہ ایک کولیبریٹ کر کے ایک اپنا گروپ بنا کے اور اپنے آئیڈیاز کو اس کو ایک سرٹن پوائنٹس پر ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں, تو وہ بڑی ویلیو ایڈیشن ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو ہم جو آنے والے جو ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے بڑا ایک بڑا پورے ایک پلیٹ فارم گورنمنٹ جو ہے وہ پوری پرووائڈ کر رہی ہے, جس کے اندر وہ اپنے جو بھی ان کے انیشیٹوز ہیں ان کو بڑے ایزیلی وہ گو تھرو کر سکتے ہیں. Thank you so much, Asaf. I think this next question is basically for both of you because it's the most relevant question at this point of time. Sir, اگر میں بڑی سٹیز دیکھتا ہوں تو obviously we see big IT infrastructure projects جو کہ یہاں پر ہو رہے ہیں. We talk about کراچی, اسلام آباد and لاہور. ہم نے دیکھا نیشنل انکیوبیشن سینٹرز بھی ہیں, آپ نے بالکل بتایا کہ آئی ٹی پارکس بھی بن رہے ہیں, بٹ ٹیلنٹ کی شارٹیج جو ہے آئی سی ایوری ویئر ایٹ دا مومنٹ, بیکاز جتنی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کی کور پرابلم اگر ہم پوچھتے ہیں اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ عاطف ٹیلنٹ شارٹ ہے, ٹیلنٹ اتنا ٹرین نہیں ہو رہا ہے. اینڈ اوبیسلی جب آپ ٹیلنٹ کو ٹرین کرنے کی بات کریں گے تو یو ہیو ٹو ٹیک دیس آئی ٹی انفراسٹرکچر ٹو the rural areas, you have to take these infrastructures to the small cities of Pakistan as well. So what kind of challenges do you see جو کہ چھوٹی جگہوں پہ اس وقت ہیں, اینڈ آلسو میں یہ بھی بتائیں کہ انیشیٹوز ایسے کیا ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. آئی تھنک لیٹس اسٹارٹ ود جمیل صاحب. اوکے, اس میں جو ریموٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں اسپیشلی ان ٹرمز آف شارٹیج آف ٹیلنٹ, دیٹ از بیکاز آف دیر از نو اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ دیر. And one of the major reason is that they have no access to those resources. Like if you say internet is the main key to access those resources, and availability of internet is almost zero there. In order to make these facilities available in those areas, or in order to cater this challenge in those areas, either local governments with the funding of federal governments, they can extend the facilities there either with the fiber. Like we are blessed in a sense that we have no infrastructure. If we see the positive side of it, in the advanced countries you see there is a massive copper infrastructure. They had to replace those copper infrastructure with fiber. However, we have nothing available there. So it's quite easy for us to directly move to the fiber. And this is what government is doing as well. But you see that the areas are so bigger and there are so many barren lands to lay fibers in those areas, and keeping in view the security concerns in Pakistan. Still, they are doing it. And with the access of these fiber cables and this fiber based access to those areas, not necessarily that you provide access to each and every house, because in those areas maybe they will not be able to afford that. So government will have to subsidize that internet facility, or what they can do that in areas where there is no fiber available, they can go for the wireless link like satellite. They can commission those satellites, and with those satellites
and fiber links, what they can do is they can develop some means smaller facilities within the university, within the school. They can set up a facility where these people can go, they can visit, they can avail that internet on a subsidized rate. And universities already has that PERN facility with a very high means internet speed link and access to more than thousands of universities. They can access the data there, and now each and everything is digital. So what they can do is that they can avail those facilities there. And what we can do is that we can impart trainings to those facilities, because we are living here, we have access to the technologies, we have people available here. We can train them in a way that they can further train those people, or the people of their areas there. And in such a way we can build those means skill set. Like if you see, health is available everywhere, health issues, but hospitals are not that much technology enabled. Schools are everywhere, and we have teachers, we have facilities, we have a lot of means facilities available there. Keeping in view these kind of facilities, what we can do is that we can develop those you can say that socio-economic systems, where you empower existing staff plus select the local people who are residing there. You can empower those people how to use technology in health systems, in hospitals, in lab tests, how to use technology in schools, how to use technology in financial sector. You have people available there, you just need to train them. And as soon as they are trained, they are going to share their information, they are going to build their skill set. Trust me that nobody is willing to leave his hometown. If he is happy there, he has the facility, and he is doing something there, this will create opportunity also for them, and they will means work in a model to train the trainer. A That very, may very important point. I that completely agree. I think very important point. Ji, Jamil over to Saab, you, if you want to add something, please go ahead. over to you, Asif sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Asif साहब, before you start, I just would also like you कि आप, because you are basically in Karachi, तो आप सिंध का भी जरा इसमें पार्ट जरूर हमें डिस्कस करिएगा, because we still see that पंजाब और इंटीरियर पंजाब में तो we have IT infrastructure, but सिंध हमें लगता है कि काफी पीछे रह गया है, and बलूचिस्तान as well. But since you are from Karachi, तो प्लीज वो हिस्सा भी जरूर डालिएगा इसमें. बिल्कुल श्योर श्योर आई एग्री विद यू कि राइट नाउ वी इन सिंध we are facing some challenges for infrastructure and other things specifically for technology. बट अभी रिसेंटली जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा कराची से ये ठठा का तकरीबन को 1.5 घंटे का रास्ता है. वहाँ पर अभी जैबिस में अपने कैंपस घरों के अंदर एरिया है, वहाँ पर पूरा पूरा एक पूरी फैसिलिटी एक अभी बनाई है. और थोड़ा स्लो है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंशाल्लाह ये जैसे जैसे चीज़ें हमारी इम्प्रूव होंगी, तो जो और हमारे एरियाज़ हैं, जैसे मीरपुर ख़ास हो गया, सक्कर हो गया, अड़ताना हो गया, तो वहाँ पर भी ये स्टार्ट सब चीज़ें होंगी. अभी गवर्नमेंट जो जो इसमें उनका इनिशिएटिव है, उसमें ये कोलैबोरेट कर रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो इस वक्त एक इशू है कि जो भी इस छोटे इलाके हैं उनके ऊपर जो स्कूल्स हैं या जो वहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है जो एज़ कम्पेरेटिवली जो कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो वो एक कोलैबोरेशन करके उनको एक्सेस दे रहे हैं कि जी वहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ और वो एक्सेस करें, और वो जो कुछ किस्म के तरह के कुछ शॉर्ट कोर्सेज, जैसे अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करें तो वो उसमें आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक थोड़ा हैवी किस्म का चाहिए होता है कि अगर आपने कोई मॉडल डिज़ाइन करना है तो उसमें प्रोसेसिंग स्पीड और ये जो आपकी जितने भी प्रोसेसर अभी जैसे जीपीयू वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है विजुअलाइजेशन के लिए, आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो उस तरह की अभी ये चीज़ें इस तरफ कर रहे हैं कि हाँ उसको हम इनेबल करें. और जो कराची के अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अभी हम 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
ऑलरेडी जो है वो एनडी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, DHS यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। इन तीन चार जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ये कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो AI से रिलेटेड हैं और बड़े सपोर्टिव हैं, और वो ऐसे बच्चे जिनकी कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन दे हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो उनकी अगर उनका प्री रिक्विजिट एक है कि जी अगर उसकी मैथमेटिक्स और थोड़ी कंप्यूटर साइंस की अवेयरनेस है तो वो उस कोर्सेज को कंडक्ट कर सकते हैं। तो जो अभी जैसे जमील साहब ने जैसे जिक्र किया उसमें सेम हमारा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये ज़्यादा इश्यूज़ हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर है कि जी वहाँ कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और वो एक्सेस जो हमारे शहर के अंदर लोगों के पास है, वो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें जैसे आपने भी कहा कि जिस पर्टिकुलरली सिंध के हवाले से, तो हमें ये एक एक्सेस है कि कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और लोग थोड़ा-सा वहाँ से कि कोई एक इशू होता है ट्रैवल करने का, लेकिन ये कि वो ट्रैवल करके यहाँ पर ट्रैवलिंग की वो करके और यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी आपने गवर्नर पाक जो कराची है उनका इनिशिएटिव था, उसमें 700 के तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन किया जा रहा है, एंड इट वाज़ वेरी इम्प्रेसिव कि वो इसी तरह सैलानी वेलफेयर वाले हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। तो और ये अब वो उसको मास लेवल के ऊपर, यानी जो छोटे-छोटे इलाकों के अंदर भी अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट उसमें बड़ा इफ़ेक्टिव है कि जो यहाँ से जो लोग ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं वो अपने एरिया के अंदर जाके फिर लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे एक तो जो आपने मास लेवल का एक इफ़ेक्टिव वो आपने रिपल इफ़ेक्ट देखना है, तो वो आपको पूरा एक नज़र आएगा इंशाल्लाह। जो हमारे लिए जो जो अभी हम देखते हैं कि जो ज़्यादा क्रिटिकल है, वो है एडवांस टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन। जैसे आपने कहा कि जी अभी रिसोर्सेज का इशू है। अब रिसोर्स का इशू ये है कि जी जो अगर हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो वी नीड गुड रिसोर्स जो स्पेसिफिक जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अब हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज अभी उस पे जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, वो अराउंड 75,000 के करीब जो हमारे कंप्यूटर साइंस पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान जो ईयरली हमारे होते हैं, और रिक्वायरमेंट जो है वो उससे आई थिंक 4 टाइम्स जो है वो बिगर देन। तो वो अगर नंबर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ यार हमारे पास बहुत बड़ा गैप है। अगर हम सही वो ट्रेनिंग वो जो जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम रख के अपने लोगों को ट्रेन करें, और उसमें जो इस वक्त एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने रीमैप किया है जो करिकुलम थे यूनिवर्सिटीज़ के उनके अंदर, उनको रीमैप करके जो फर्दर कुछ कोर्सेज ऐड करवाएं जो इस वक्त जो करंट आईटी और कंपनीज और जिस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये अगेन बहुत ये एक ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें अगर जो भी इसकी जो कंटिन्यूटी, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो इशू बस ये होता है कि जी जो पॉलिसीज होती है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए, सो दैट ताकि आपको जो उसकी डिलीवरी है उसकी इफेक्टिवनेस आपको नज़र आ सके। तो वो हमारी एक ये है कि इंशाल्लाह ये जो नज़र आ रहे वाले हालात हैं जो अभी नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, और दे आर वेरी एग्रेसिव, और जिस तरह के अभी इतने सालों से हमारी कोई कोई साइबर क्राइम की कोई पॉलिसी नहीं थी, वो पॉलिसी वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई है, वो भी लॉन्च हो गई। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंशाल्लाह ये चीज़ें और बेहतर होंगी, और जो हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा जैसे जमील साहब ने कहा कि जी कोई मूव नहीं करना चाहता अपने घर से दूसरी तरफ शहर में जाके काम करना। अगर हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें उन्हीं लोकेशंस के ऊपर इनेबल हो जाएँ, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, और जो जो नंबर्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके हमें चाहिए, तो वो नंबर्स आने एक्चुअली इन्हीं एरियाज़ से आने हैं। तो वो जो एक गैप है रूरल का, अर्बन का, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ट्रेनिंग के हम उसके करके अगर उसको हम गैप को फिलफिल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इकॉनमी के अंदर बहुत बड़ा एक आईटी का ये वैल्यू एडिशन होगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो आतिफ वो ये है कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जैसे हमारी एग्रीकल्चर के 50% ऑलमोस्ट 50% जो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। वो आप चाहे लेबर में ले लें, वो चाहे आप
एक्सपोर्ट में ले लें। तो इस वक्त हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है एग्रीकल्चर के अंदर कि ना हमारे पास एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन है, ना हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन है। तो अगर हमारे जो मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो जहाँ डिफरेंट एआई के सोल्यूशन उस पर देख रहे हैं, उस पर एआई प्लस आईओटी के कुछ सोल्यूशंस को देखें उनको जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अभी रिसेंटली एनडी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर खुर्रम है, उनको बड़ी अच्छी एक उन्होंने सोल्यूशन जो क्लाइमेट से रिलेटेड उन्होंने फार्मर्स को फैसिलिटेट करके एक सोल्यूशन डिज़ाइन किया है। अब वो सोल्यूशन को उसको एक बहुत अच्छी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर उनको ग्रांट भी उसकी ग्रांट भी मिल गई है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अनटैप है, उनको अगर हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसको टैप करें और इसमें एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है और इसको बड़ा इजीली जो है ना वो अगर थोड़ी सी एफर्ट किए जाएं और थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग और आईओटी बेस्ड बहुत सारे सोल्यूशन डिज़ाइन किए जा सकते हैं और इवन उनको दुनिया के अंदर मार्केट किया जा सकता है। क्योंकि आई हैव बीन इन क्रोएशिया, बोस्निया, पूरा यूरोपियन साइड पे मैंने एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल के साथ। तो उसमें हमने यही देखा कि उनके पास भी बहुत सारी अभी चीज़ें नहीं हैं स्पेसिफिकली फॉर ऑटोमेशन से। तो वो हम यहाँ पर अपने इसके क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी ये जो एग्रीकल्चर है वो इतनी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, यानी आप कराची से स्टार्ट करें तो एंड पेशावर आप ऊपर पूरे साइड चले जाएं आप पर तक, तो वहाँ तक हमारा हर जगह हर लेवल के ऊपर जो है वो फार्मिंग हो रही है। तो अगर हम उसकी चीज़ों को जो प्रोसेसेस को अगर वो करके ऑटोमेट कर दें और उनसे ऑटोमेशन से जो इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक से डिफरेंट है बट ये है कि क्योंकि इंटरेस्टिंग है, अभी राइट नाउ जो दुनिया के अंदर जो इशू है वो क्लाइमेट के, वेदर चेंज के, और उससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। तो अगर हम इस गैप को थ्रू ऑटोमेशन फिल कर सकें और अपने फार्मर्स को एजुकेट कर सकें और उसकी जो 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 ईल्ड है और उसकी जो प्री और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको हम जो है कंपनसेट कर सकें किसी तरह से। नहीं, आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री विद यू आसिफ। जमील साहब, आसिफ साहब के 2 पॉइंट्स हैं जो आई वुड लाइक टू आई थिंक टेक इट टू यू एज वेल। एक, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, सो इवन इफ वी हैव द ट्रेन रिसोर्सेज और इवन वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट नीड्स टू अपडेट वेरी क्विकली। एंड देन अगेन रूरल एरियाज में तो अगर कुछ बन गया तो वो तो चेंज करना एक और दूसरा सवाल है। And so that's why I would like to ask you, do you think this is the right time that we should not only depend on university IT graduates or their infrastructure, and we have to start penetrating partnership with schools, small training centers, build very quick 6 months, 1 year programs for rural areas, और उसी हिसाब से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्ड किया जाए। ये बिल्कुल आसिफ साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने रिसोर्स क्रंच की बात की कि जी वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं है। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि वहाँ पे सबसे मेजर इशू इज़ पावर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर हम आईटी वर्ल्ड में देखते हैं तो आईटी की पावर इज़ इंटरनेट एंड अदरवाइज टेक्नोलॉजी की पावर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस चैलेंज को भी जैसे सोलराइजेशन से केटर किया जा सकता है। एज फार एज जब आपने कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी बिल्कुल हम सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। Like in SSGC we have started a new initiative that we are taking diploma holder graduates also. And even we have a learning development center where we hire people, we induct them, we train them, and then they are free to go. Either they can work with us or they are technically trained for all the technologies as well as for the operations involved in gas industry. So from here we can also export the talent to outside Pakistan, even in the remote areas, specifically talking about Sakhar.
Sakhar and associated region has the severe resource crunch. Reason being, you have oil and gas sector companies there. If any professional can even use computer swiftly, and he is well means trained on office, and he can use internet, he is very conveniently hired in those companies, because they, in each and everything you need this computer intervention. So they immediately hire those people. What we can do is that we can also do the consortium with the schools, with the private training centers, and we can transfer technology there. Means all the government sector and private sector, multinational companies, their means skilled resources can be hired or even engaged for this cause, because this is a national cause that will bring a lot of facilitation to those areas. Because if you engage one person in any of the assignment, he will bring rest of his family members there. Everyone Agree. wants his family members and his the people of his areas to grow, so that will make a big difference. And schools are one of the means, you can say that, ready-made facility for us, where we most probably only going to need the power. Means power in terms of electricity. If we have the electricity there, internet facility is already available in most of the schools, and we can even do the remote trainings in those areas. That will bring a change. And meanwhile, if we will means directly switch to the fiber in those areas, reason being that we don't have any facility there, so it will take a lot of time to change that, means high speed medium to another. Because as Mr. Asif said that yes, for artificial intelligence you need compute, you need storage, you need high speed systems. So for all those stuff, you need a centralized space to host those servers, some sort of smaller data centers. Now you have those facilities available, that data center is coming in a rack. You don't need to purchase separate things and arrange for the cooling and power, UPS and rest of the stuff in one rack. You have the cooling, you have the compute, you have the storage, or the other alternative is cloud. But we have to do some means cost benefit analysis, that whether it's going to be feasible there or not. For government, yes, it is possible. We have a very big facility of NTC data centers, that is in Lahore, in Islamabad, and I hope that they are going to revamp the facility of Karachi also. We can always use that, and most of the government schools are using that NTC connectivity. Where you find no other media, you will find NTC DSL, and we can very conveniently map that and equip that lab with the latest equipment and required means storage, compute, and RAM, all processing stuff, so that we may impart those latest technology trainings to those remote areas. And that will definitely bring an impact on that. Even if they leave and go to somewhere else, they will either move to Karachi or Islamabad or outside Pakistan. Even then, that will make a difference. In any case, we are going to be in a better position in terms of revenue generation, that we are going to get some benefits from there. I completely agree, Jamil साहब. Mean topic इतना vast है. You really want to talk about policy making, you want to talk about some other things as well. But because basic fundamental problems हमारे इतने बड़े हैं कि topic वही drag करता है हमें बार-बार, and we would like to contribute there. But now, Asif साहब and Jamil साहब, actually both of you, I now would like to talk about cybersecurity issues in Pakistan. And do you think that since अब जो process बड़ा होता जा रहा है, so what are the steps government needs to take to make sure that our cybersecurity improves? और हमारे digital assets को safeguard करने के लिए क्या करना चाहिए? What do you think? जी, इसमें I would like to highlight one thing here, that technology is growing, data is growing, infrastructure is developing, that is also expanding.
But one thing which we need to focus is the IT security, the data security, and securing your whole infrastructure from any kind of external threats. If you talk about an enterprise, that is secured by the specialized equipments. But generally, if we see in terms of security, initiatives are not that bigger. Like I can see that we have made a national cyber security policy, we have IT security policy, we have some emergency response team for addressing these threats, but implementing those policies on ground is a bigger challenge, because in security I can see that in most of the organizations it is an ancillary services, and it's not catered, or it is not considered as one of the critical mean service. It is an auxiliary function which any of the IT team member starts working on it. Whatever his capacity is, he is doing. But in IT security, you need investment, because as soon as the setup is growing, threats are growing. In order to mitigate those challenges, in order to address those threats, you need the latest technology equipment, the software, and required countermeasures for that. Like there were times we were just looking at the cyber threat, and we were catering that either through an antivirus, a ransomware came. But now if you see, they altogether encrypt all your data, then they start demanding, they share your data with you and then tell you that this was the subset. So in order to address all these challenges, you need advanced systems. We cannot rely on just the security system. One system is means a passive system which is just securing your network. Now is the time where you need to deploy a system which automatically starts taking decisions, like not a preventive system but a corrective system as well, just like adaptive security type system, where the system automatically, some sort of artificial intelligence type, the system automatically detects any unusual activity. It checks and verifies with its checklist. If it perceive that there is something dubious, it will immediately block that and then intimate the administrators that this is what I am observing. If that is a legitimate move, then you will allow that. Otherwise, you will keep on blocking it and update the dictionary on those certain, or on recent, or whichever threats are in your data dictionary. Because these updates, hackers keeps on creating these threats, and you are here to cater these, and you can only cater those through those automated systems, where system in itself also is so intelligent that at least it should take basic decisions. So I can see that government is taking some initiatives, especially to mention some of the few. I recently attended that event in which they just briefed about NCCS, National Cyber Security, National Center for Cyber Security. That was really impressive. And Asif Saab, Dr. Saif was also there. We were in that event before, I guess, 2 or 2.5 months. And that was so impressive that in various presentations from various institutions, what they have done is that in NCCS, they have made a consortium with 7 to 8 bigger universities, including NUST and LUMS and 2, 3 more universities. So few of the universities were from Karachi as well. So what they do, that they do the R&D, and NCCS is supporting them in their cause. All the universities had developed their security centers within the universities, and students are trained there. So that is how we can cater, because we can see that most of the times
our websites of especially of the government sectors are hacked, and they are replaced with some other means with messages or so. If we do we will take these kind of initiatives, we will definitely be able to cater these challenges. So security is one of the major concerns, and I think each and every organization must look into it. बिल्कुल जैसे जमीन साहब ने जितना डिटेल में डिस्क्राइब किया है, आई थिंक हम वी आर फेसिंग सेम चैलेंजेस के वी हैव सम बॉडीज फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑफ एट गवर्नमेंट लेवल, बट इन ग्राउंड उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। लाइक क्योंकि इस वक्त राइट नाउ अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जो सबसे वैल्यू है वो डेटा की है। अब वो आपका डेटा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हो, वो कॉर्पोरेट के ऊपर हो, वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर बेस करके हो, वो इस वक्त जो वैल्यू है वो डेटा की है। और डेटा की जो एक्चुअली जो पॉलिसी है वो हमारे यहाँ इतनी क्लियर नहीं है कि जी एक्चुअली मुझे 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 अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इवन इवन आई एम प्रीटी मच श्योर कि जी जो जो हमारी जितनी कॉर्पोरेट्स बड़े हैं उनकी उनकी एक्चुअली डेटा की कोई पॉलिसी नहीं है। तो जो जो थ्रेट्स आ रहे हैं रैंसम के, उसमें रैंसमवेयर है और डिफरेंट जो हैकर्स हैं जो, और वो उसके अगेंस्ट में जो हमारी कोई प्रोएक्टिवली इवन करेक्टिवली कोई मेजरमेंट नहीं है। तो उसमें अगेन जैसे जमीन साहब ने कहा कि जी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, वो हमारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी जो जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो इतनी अभी सॉरी टू से बट इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे अभी गवर्नमेंट की कुछ अनाउंसमेंट हैं कि इसके ऊपर वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कुछ चीज़ें उनको दोबारा से रीमैप करके और डेटा सेंटर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप अपनी उसको सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। बट अगेन ये एक बहुत बड़ा गैप है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा के जो थ्रेड्स हैं, इवन वो चाहे वो आपकी कॉमर्स की वेबसाइट्स हों या आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हों, पोर्टल्स हों, जहाँ पर डेटा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो 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 कि पास ऑन करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसका, उसके विद सीरीज ऑफ जो भी उसके कम्युनिकेशन चैनल के अंदर जो लोग आते हैं, तो वो वहाँ पर एक सिक्योर एक एक फायरवॉल या एक सिक्योर वो स्ट्रक्चर बिल्ड करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये अभी आप जितना भी जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे वो बाकी सब पे तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये वाला गैप बहुत बड़ा है कि हम एक जो जो डेटा की सिक्योरिटी है उसके हवाले से हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, और वो चाहे गवर्नमेंट लेवल हो या कॉर्पोरेट हो, वो हमारी अवेयरनेस नहीं है। तो पहले तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो हमें अब ये बहुत सारी चीज़ें जैसे आप मोबाइल के थ्रेड्स हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के वो मैसेजेस के थ्रू लोगों को फ्रॉड के और बहुत सारे केसेस हैं, और वो बड़े प्रैक्टिकल मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर कि जी हर हमारे उसमें से कोई हर एक रेशो निकालें तो वो बड़ा क्लोज होगा। हाँ, ये 10 या 15 लोगों में से लोग जो हैं वो बड़े इफेक्टिव से इसका कोई ना कोई इफेक्ट उनके ऊपर हुआ है। तो ये इस तरह की वो चीज़ें जिसको जो है वो कोई सिक्योर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए कोई कोई डिज़ाइन ऐसी चीज़ों जो प्रैक्टिकली ग्राउंड ऑन ग्राउंड जो है उसकी इम्प्लीकेशंस हो। सॉरी आतिफ, वी कांट हियर यू। माइक आपका माइक बंद आते हुए। जी 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 सॉरी जमीन साहब आई जस्ट वांटेड कि आप उस पॉइंट को जरूर एलिब्रेट करें, बिकॉज आपने कहा कि इंटेंट भी नहीं होता कंपनीज का। इनफैक्ट आई थिंक जो कोई काम नहीं कर रहा होता उसको साइबर सिक्योरिटी की तरफ लगा दिया जाता है, और अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उस इंसिडेंट के बाद तो वीसी के 1 महीना 1.5 महीना एवरीबडी स्टार्ट फॉलोइंग द पॉलिसी और कोई पॉलिसी मेकिंग होती है, पर इवेंचुअली वो सब फिजल आउट हो जाता है, और फिर वापस जो है वो यूएसबी लगाने की परमिशन भी मिल रही होती है, कोई और प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किए जाते हैं। So, do you think this is also a bigger problem, that there is also an intent issue as well? Yes, of course, bilkul. This is one of the major, not even a problem, but a threat.
a very serious concern for the organization, because either वो जो कुछ भी नहीं कर रहा या वो बंदा who is already engaged in so many things, he is doing security as well. But if you see the security, the essence of security is not only on the infrastructure. It's starting from your PC to your switch, then your router, then your gateway, all the application, and every application has a different nature, different threat, different means उसके अंदर आपके ऐसे concerns है which need to be addressed. सर्वर के ऊपर the application, the server which is hosting that application, उसके threats हैं. You cannot only focus on the application. Application is residing on an OS, and the OS in itself has some vulnerabilities. So for that, we must have a dedicated team, even if it's comprising of 1 or 2 people. They can at least keep on checking the stuff, that what are the threats, what is the difference which I am observing. All of a sudden server starts responding slow. Could be because of a virus, could be because of a malware, like an SQL injection. That is a very old variant of this virus. And still the organizations, when they build a server, install SQL, whole the network, trust me, whole the network is down because of that SQL injection, though the fix has been released before 14-15 years. What's that? I just installed the server, I installed the SQL on that, and I handed over that to the relevant team. They started working on that, and SQL injection जो उसका वायरस था उसने he broke down the whole infrastructure of your organization. All the services are dead because you are unable to respond. The server is not responding at all, and all the users are crying that we are unable to access the service. And when you identify, you see that recently I added that SQL server and that has that virus. So what's that? If your team is equipped, even if a single person, he will just review and check these, at least these common and prominent means issues. He can fix that. He will simply block the port and the systems will be up and running without any threat. So this is a very serious concern, that every IT organization or every critical organization which has an IT function, they must hire some security people. There were times that when we were saying that IT is a support function. Now, if we see the involvement of technology in various trades, in each and every trade, IT is day by day becoming the core function. It's no more a support function. And if you will treat a core function in terms of a support function, you will definitely keep on facing challenges on and off. I would like to add one point. Just as said जमील साहब कि उसमें हमारे पास जो 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 इशू है वो ये है कि अभी टेक्नोलॉजी की जो जो बहुत रैपिड चेंज, और हम तमाम एप्लीकेशंस को वी आर ट्रांसफरिंग टू ऑन 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 क्लाउड कंप्यूटर क्लाउड सर्वर्स. तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी डेटा की जो सिक्योरिटी है उसका कंसर्न है. अच्छा, नॉर्मली वी जो हमारे जो जितने भी हमारे उसमें ये होता है कि जी शायद जब डेटा का एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर शायद किसी सिक्योरिटी वाले कंसर्न की ज़रूरत पड़ेगी. बट एक्चुअली ये डे टू डे एक्टिविटी ये मॉनिटरिंग होती है, जिसमें आपकी ये जो जैसे जमील साहब ने कहा कि जी आपका सिंपल है कि एक एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो पूरे सर्वर को पूरी आपकी चॉक कर देता है, आपकी पूरी नेटवर्क को. वो आपके लिए बहुत बड़ा इशू है. अगर आपने एक प्रोसेस करना है, इनवॉइसेस बननी है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर उसकी मैच्योरिटी एक सर्टेन टाइम के ऊपर होनी है और उसके अंदर वो डिलेज आ रहे हैं, तो वो सारी जो चीज़ें वो हमारी वो और जो अभी जितना हम एडवांस जैसे 5G की बात कर रहे हैं, हम अभी बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, हाई बैंडविड्थ की, तो वो प्रॉब्लम सारी एक साइड पे हो जाती हैं अगर हम इस साइबर सिक्योरिटी के इस कंसर्न को ऑन ऑपरेशनल के जो जो जैसे
अभी जमीन साहब ने कहा कि जी सपोर्ट IT इज नॉट एन सपोर्ट डिपार्टमेंट, राइट नाउ इट्स कोर डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी जितनी जो जो बिजनेस की डिपेंडेंसी है वो तमाम एक एक ट्रांजेक्शन से लेकर एक मेच्योर होने तक वो सारी जो है वो IT के स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो उसमें जो की रोल है वो एक साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी जो डेटा की जो रिलेटेड जो जो भी रिसोर्स है उसके ऊपर है। अगर वो आपकी लाइव नहीं है, आपने किसी किसी भी मतलब जैसे हम आपने आपने जैसे आपने कहा था कि जो एक फ्री आदमी था उसको हमने कह दिया कि यार तुम जो है वो साइबर सिक्योरिटी देख लो। एक्चुअली ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो अब हम प्रेटी मच श्योर कि शायद अब कंटिन्यू नहीं होंगी और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और हमें ऐसे ही अपनी जो रिसोर्सेज उनको न्यू टेक्नोलॉजी पर ट्रेन करना पड़ेगा ताकि जो ये इस तरह के थ्रेड्स हैं और जो साइबर से रिलेटेड जो भी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फौरी रिजॉल्व किया जाए। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यार, कोई जब इंसिडेंट हो जाता है तो उस वक्त वी सी अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड अच्छा वुड बिकॉज वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई आल्सो वुड लाइक कि आप लोग कंक्लूजन भी करें, बस जस्ट एक पॉइंट हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। वुड यू थिंक गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें, लाइक डू दे मेक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज, पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि एवरी IT कंपनी एंड एवरी IT इंस्टीट्यूशन हैज टू फॉलो इट? क्विकली अगर आप लोग एक एक जुमले में जल्दी से बता दें। आतिफ मेरा ये सिंपल इसमें है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है, बट प्रॉब्लम ये थी कि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी क्योंकि जब आप किसी भी पॉलिसी की बात करते हैं तो वो कनेक्टेड एक पूरी एक, तमाम सबका जितने जो जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं या दूसरे इदारे हैं उन सब से आपको कंसेंसस लेना पड़ता है। तो होपफुली ये जो जो अभी रिवाइव करके दोबारा जो प्लान करके लॉन्च करेंगे वो इंशाल्लाह काफ़ी इफेक्टिव होगी और गवर्नमेंट उसके अंदर बहुत सीरियस है, क्योंकि ये जो थ्रेट्स हैं डेटा से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो क्विकली इसके ऊपर जो है वो वर्किंग हो रही है और होपफुली ये विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ये लॉन्च करेंगे, उसको रीमैप करके वो दोबारा से एग्जीक्यूट करें। जमीर साहब इफ यू कैन आल्सो कमेंट। Bilkul, Asif Saab very rightly said, because in between they were very means aggressive on those policies formulations, and कुछ इन्होंने इसके fractions launch भी किए थे. Like if we see now, we have IT policy, we have security policy. Then quite recently, before 8 to 10 months, they also launched that e-commerce policy. Cloud first is already there, but the thing is that implementation of those policies is very slow. Very rightly said, it is also because of that political instability. Otherwise, when the cloud first policy was launched, it was very aggressively followed by various organizations for the adoptions, but challenges still are remains the same, that the stuff highlighted in those policies were in fact not implementable in Pakistan, because one of the core thing in that policy was that your core function cannot be shifted to the cloud which is not hosted within Pakistan. So in Pakistan we have already almost negligible cloud services provider. Means ISP, there is an ISP who kept on providing internet services. He is co-locating your servers in his data center. That is somehow some kind of cloud for you. Other than that, now I can see that NTC is investing a lot. Jazz is building a building very aggressively, very refined data centers on means universal standards. PTCL is working on that, and the facilities they are offering are much better than that. But still, if we talk about moving those services to the cloud, there is no cost comparison. And secondly, the cost of infrastructure and the hidden cost for adopting those cloud systems is way beyond your on-prem systems, because in on-prem you have the data center, you just need to place a server and you will start the service by installing on that. But in case of cloud, like we take the example of SSGC, we have our services spectrum in Sindh and Balochistan. If I move my ERP to the cloud,
I have to make sure that that stronger internet connectivity with power and compute is available in each and every location who is using that ERP. For ERP, we have limited users, but if we talk about the users of billing engine, billing is in each and every means office. So you have to remain connected to that cloud all the times. So you need to facilitate them with the internet connectivity. Without internet, you are nowhere. You cannot utilize those functionalities. So there has to be a parity between the policy and the ground realities. Now I can see that various operators are talking to Microsoft, to Oracle, to SAP, and to rest of the operators to start their cloud services in Pakistan so that we may start using those services here. Thank you so much, Jamil Saab. I think let's move towards the conclusion now. Again, because topic itna bada hai aur itna interesting hai कि we would love to talk about it, and we need, I think, more than one session to cover all the topics, and especially people like you with experience जो आप दोनों का है. बहुत सारे सवाल और हैं जो पूछना चाह रहा था, but I think let's I would like कि आप लोग एक conclusion argument अपना एक conclusion comment दे दें, and next 5 years آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ what are the things, what are the initiatives you would like government to take? آصف صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی تھنک عاطف جو ابھی جو ہمارے جو سب ہیں وہ ایک فائنینشیل کرائسس ہے. سب سے پہلے اس کو گیپ فل کرنے کے لیے ہمیں کولیبریشن کرنی ان کی ضرورت ہے تھرو ڈفرینٹ جو فنڈنگ جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوں گیا, ورلڈ بینک ہو گیا. تو اس طرح کے تو ہمیں ایک پلیٹ فارمس چاہیے جہاں پر ہم اپنے فائنینشیل کرائسس کو ٹو اڈاپٹ نیو ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر. تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنے فائنینشیلس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا ہے. دوسرا جو گلوبل اور انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی لیپ سعودیہ میں ہوا, اس میں ہمیں اس کو بہت کرٹیکلی اس طرح کے ایونٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم جو انٹرنیشنل کسٹمرز ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو اپنی طرف پل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے. اس کے بعد کچھ آپ کا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, اور جتنی ریپڈلی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, ہم نے اس کو اکوپ اتنا اس طرح سے کرنا ہے کہ ہماری جو انفراسٹرکچر ہیں, جیسے ابھی جمیل صاحب نے کہا کہ جی ہمارے یہاں ابھی ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ جی ہمارے یہاں تو بہت سارے ایریاز کے اندر کاپر بھی نہیں ہے, تو آپ کو کچھ ریپلیس نہیں کرنا, آپ نے صرف نیو انسٹالیشن کرنی ہے. تو ایک یہ ہمارے لیے دوسرا سب سے کرٹیکل جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریسورس کی اویلیبلٹی اور ان کو اس طرح سے اکوپ کرنا. تو وہ ہمارے پاس جو ٹریننگ سینٹرز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ جی اس کو ہم ایک ماس لیول کے اوپر لے جائیں کہ اسکولس کے اوپر چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنس بنا کے, جس طرح سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ جی کچھ ویلفیئر آرگنائزیشن, کچھ NGO ہیں وہ جہاں دوسرے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن کو اور وہ IT ریلیٹڈ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, کیونکہ اس سے ہم بہت افیکٹولی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسی ریسورس کے اندر جو اپنی اور اس کی اور جو فیملی کو جو سپورٹ کرنی ہے اور جو اکانومی کے اندر اس نے ایک اپنا ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, تو وہ بہت کوئکلی کر سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹس ہے. باقی جو گورنمنٹ اپنی جو پالیسیز ہیں جس سے ریلیٹڈ, جیسے سائبر سیکیورٹی کی بات ہو گئی, اور ہماری جتنی ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, پھر ہماری جو IT پالیسیز ہیں ان کو ٹرو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ اس کی کچھ اس طرح کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو افیکٹو اس کا جو جو ڈاؤن دا لائن جو ان کا رول ہے وہ پتہ چل سکے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں جتنے یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی, جیسے میں ابھی لاسٹ لاہور کے اندر یہ پائیکون ہوئی تھی, وہاں پر ہم یہ بات چیت کر رہے تھے کہ ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی تمام چیزوں کو ڈیول کرتے ہیں, لیکن ابھی یہ کنسٹنٹ آ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اس طرح کا ہارڈ ویئر ہی اویلیبل نہیں ہے, اور وہ اس ہارڈ ویئر کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر, تو اس کی کاسٹ ایک عام آدمی کے لیے, ایک انٹرپرینور کے لیے افیکٹولی نہیں ہے. تو اس طرح کے کچھ چیزیں ڈیزائن کرنی چاہیے جس سے
जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास एक लिमिटेड उसका फंड होते हैं और वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उनको प्रमोट किया जा सके, उनको फैसिलिटेट किया। जी जमीर साहब, योर लास्ट कमेंट। जी, तो what I see is that in fact Pakistan to me seems a land of opportunities because अगर आप देखें तो most of the field is empty and you need to develop stuff here. Like if we see the government initiatives, NITP is one of the initiative which I really liked. What they did is that they made a national IT board, and in that board they hired various technology skilled professionals, and they kept on developing various applications for e-services and e-governance. And as per my knowledge, they have made more than 100 applications which are live and running in most of the government entities like e-office, messaging system, paperless, workflows, digitization for transformation, for means Madadgar like services, and they are running across the board all over the Pakistan. If that kind of service continues, that will make an impact. Another initiative which I can see is that after the means launching of e-commerce policy, I can see a very big change in financial sector. Fintech is going to be one of the most demanding and potential field where we are going to have a lot of stuff. There were times when we were talking about the payment gateway systems. That is obsolete now, and that is a routine requirement. Now we are talking about the micro systems, micro payment systems where you use that digital payment channels. Like one of the few is Raast. You need that digital channel. With that digital channel, you transfer your funds without paying anything to Visa, Master, Cyrus, or any of the other service provider. If you will entertain people with these kind of services, uh, that will facilitate and bring a lot of change in the system, because your funds are going to be registered, and with those funds you can bring people in the tax net, and that will have a very big impact on our economy. What we are doing today is that we are going to the Easy Paisa shop. I give him 400 rupees and I ask him, please pay my bill. I go to the Jazz Cash and I do the same. Why should I not have a single ID? My CNIC, my cell number, or my any of the national ID number has to be my account number. Each and everything is tagged. Nadra has the system. If you link all those things with that, then fintech sector is going to grow, and that is going to extend these digitized payment services across the board with a very, very major impact on the system. But for that, you need those micro payment gateways that will bring the real change. Like in India, if you see, even guy selling the milk, the vegetable man, the bakery shop, each and everything, they are doing payments through their digital channel. We have a challenge here that Jazz has a separate QR code for payment. Easy Pesa has a separate. Each and every outlet has their own code for payment. It should be unified. If you will unify that code, that QR code is unified, your funds will be transferred from your account to that account without involving any of the third party entity, and that all will be registered. But here the challenge is that most of the entities, they are not allowing. Entities here, I mean to say the banks, they are not allowing that third party application to take funds from your account. But they are okay if you are getting funds in your account. But taking funds out through the third party utility, they are a bit reluctant on that. But now there are services. Avanza system is here. Switch is another system. They are evolving, like Naya Pay. They are providing these kind of services where you can do the instant transfer. But if we do a unified code for that payment transfer, that will bring a very major change. And for the next 5 years, I can see a very, very big and major change.
and that will have a very major impact on our economy as well. Thank you so much, Jamil Saab. I think digital payment gateways are the topic of lifetime to discuss, to be very honest. Again, I think we all are facing big issues in our capacity. It was wonderful talking to both of you. I hope that all of the listeners, जो भी हमने contribute करने की कोशिश की है, उनको फायदा होगा. And I think giveaways बहुत सारे हैं इस conversation के, पर सबसे important giveaways, I think we all agree that we need to train new young people. I think there's a huge young population available in Pakistan. If we not tap them rightly, if we not train them rightly, I think they become a big vulnerable situation for the coming 5 to 10 years. And I think for that, everybody needs to collaborate. Government needs to do their part. We all needs to also participate in whatever way we can. Asif Saab and Jamil Saab, it was an honor having both of you, and I hope that we can do much more sessions like this and have an amazing Ramzan for to both of you, and have a good Eid. Ji. Allah Hafiz. I'll see you Thank soon. you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you very much.